ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है? Okay, what does it mean? So basically geometric mean means, suppose we are having a term A and a term B. Okay, इन दोनों के बीच में, like if with the help of this term and this term, if we want to create a geometric sequence, अगर हमारे पास एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, okay, here we are calling it A, okay, it's just a constant, a number, and if we are having another number B, then with the help of these two numbers, if we want to create a geometric sequence, okay, suppose we want to create a geometric sequence having two terms in between A and B, or having one term in between A and B. Let's talk about a sequence we want to create using A and B, okay, which must be geometric sequence. Then we can create a sequence. The middle term, the means, here the mean means the middle term, it will be under root AB. If we will take the middle term in such a way, then it will, this all must be in geometric sequence. Think about it. चलो चेक कर लेते हैं कि ये जो मैंने a रूट ए बी बी ऐसा कुछ सीक्वेंस लिखा है, क्या ये जीपी है? जीपी का मतलब कॉमन रेशियो तो सेम ही होना चाहिए, राइट? राइट? तो if we'll be taking the second term divided by the first term, हमें क्या मिलेगा? a का मतलब, can we say a means root a into root a? Can we say yes or no? Ali and Alina, can I say? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so if we are thinking that a means root a into root a, and in numerator a root a into root under root ab can be taken as a root a into root b, it's the same thing. So one root gone, and we are left with root b by root a, or maybe we are left with under root b by a. Let's check. In third term by second term is also giving us the same ratio, then we can say that yeah, we have created a GP. Okay, so थर्ड टर्म बी बाय सेकेंड टर्म ए बी, और अगर यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन करें, b can be taken as root b into root b, ab if you take root a into root b, you can see this term, and still we are having root b by a. That means हमने एक नंबर दिया हुआ था, दूसरा नंबर दिया हुआ था, इन दोनों नंबर को यूज करके बीच में एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस करके एक जीपी क्रिएट कर दिया, और इससे जो बीच में नंबर हमने इंट्रोड्यूस किया है, हम बोलेंगे ये है ज्योमेट्रिक मीन. गेटिंग इट? गेटिंग इट? अलियन अलीना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम एक ही नंबर बीच में ऐसा रूट ए भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या हम 2 4 5 6 नंबर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ए बी के बीच में? ए कोई एक नंबर है, बी भी कोई एक नंबर है, इन दोनों को बस यूज करके क्या हम एक बड़ा सा सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें 4 5 टर्म हो, या फिर 7 8 टर्म हो, या फिर 10 टर्म्स हो, या फिर 20 टर्म्स हो? यस, वी कैन डू सो. ये ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट हम यूज करके हम एक जीपी क्रिएट कर सकते हैं जिसमें जितने नंबर चाहिए, जितने नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, उतने नंबर ऑफ टर्म्स हम ले सकते हैं. सो सपोज अगेन हमारे पास एक कोई नंबर है, a is just a number, please don't get confused. A is just a number and b is just a number, and हम कितने सारे टर्म्स इंट्रोड्यूस करने चाहते हैं मिडिल में. सो मे बी g1 g2 g3 g4, ऐसे 4 टर्म्स हमने बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए, और अब हम देखना चाहते हैं क्या सिर्फ a और b की हेल्प से हम g1 g2 G3 G4 ये सारे फाइंड कर पा रहे हैं, हाँ या ना? तो सोच के देखो. बेटर लेट मी टेक अ नंबर्स. ओके, लेट मी टेक नंबर्स. सपोज the question is like this: insert
क्योंकि ए एंड बी ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा. 3 numbers between 1 and 256 so that the resulting sequence must be in G. Insert 3 number 1 and 256 के बीच में कोई ऐसा 3 numbers इंट्रोड्यूस करो so that फाइनली हमारा जो सीक्वेंस क्रिएट हो वो जीपी में हो. ठीक है, तो ये जो 3 नंबर्स है, 3 मिसिंग नंबर्स है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे. तो सपोज दिस वन इज G1. इस टर्म को अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है. नाउ ध्यान से देखो, क्या हम बोल सकते हैं लाइक 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म इज जीपी का, A5 is 256. Can we say that Ali and Alina? Yes, ma'am. Can we say that? We can say that is GP का first term A is 1 and fifth term is 256. At least इतना तो हमें पता ही है, right? अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें फिफ्थ टर्म पता है तो क्या हम फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, nth टर्म वाला फॉर्मूला, ए आर टू द पावर n माइनस 1. ये फॉर्मूला था ना nth टर्म का जीपी में, राइट अली एंड अलीना. चलो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे फिफ्थ टर्म के लिए. दैट मीन्स फिफ्थ टर्म विल बी a r to the power 5 minus 1. yes, that means a r to the power 4. इसे हम कंपेयर कर सकते हैं 256 से. यस और नो अली एंड अलीना? Yes, ma'am. A we know already, a is 1. okay, r to the power 4 256. दैट मीन्स क्या हम ये कहना चाहते हैं कि r to the power 4 is 256? yes, we wanna say that. And is it possible to find r from here? maybe. Let's do the factorization of 256. Can we say that 256 means 4 into 4 into 4? Can we say that? Check it. Oh, it is 64. Let me check what can be taken. How many 2's we are getting from it? Please check it, no? Ali and Alina. What will be R? Oh yeah, 4 we can take. Yes, why I was not getting, because I have multiplied only 3 times, but here the power is 4. So there also 4 to the power 4 will be there. Yes or no? Ali and Alina? Okay, it will be 4. That means r to the power 4 is same as 4 to the power 4. That means can we say r is plus minus 4? Because जब भी even power हमारे पास होता है, या तो 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, हमारे पास हमेशा प्लस माइनस साइन ही आता है. Okay, r is nothing but the common ratio is nothing but plus minus 4. Is it crystal clear so far? Getting it? Ali? Yes, ma'am. Okay. तो हमारे पास जो दो नंबर्स दिए हुए थे कि 1 and 256 के बीच में 3 ऐसे नंबर डालो ताकि हमें एक सीक्वेंस मिल जाए और वो जो सीक्वेंस हम क्रिएट कर पाए वो जीपी में हो. तो हमने क्या किया, एक टर्म कैसे इंट्रोड्यूस करना है, वो तो ज्योमेट्रिक मीन वाला कंसेप्ट दे रहा है कि अगर एक ही नंबर इंट्रोड्यूस करना है तो वो हम रूट ए बी के हेल्प से कर पाए. ठीक है, अगर इससे ज्यादा करना है नंबर इंट्रोड्यूस तो हमारा बेसिक जो nth टर्म का कंसेप्ट है वो हमें हेल्प कर रहा है. अब अगर हमें G1 फाइंड करना है, G1 क्या है, सेकेंड टर्म.
सेकेंड टर्म का फॉर्मूला बता। A2 का फॉर्मूला क्या होगा? A r to the power 2 minus 1, that means A r, yes or no? अली एंड अलीना, हमें A भी पता है, हमें R भी पता है, अभी अभी हमने R फाइंड किया है, एक +4 एक -4। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड टर्म हमारा A is 1 and R will be taking +4 one time and another time will be taking -4। टू केसेस हम जनरेट करेंगे इनसे। Am I making sense to both of you? Yes, ma'am. अली, Yes, ma'am. ओके। सो ऐसे करके हम अपना सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे। चलो सीक्वेंस फटाफट जनरेट करते। एक बार A 1 लेंगे और R +4 लेंगे और दूसरी बार अगेन A 1 लेने वाले हैं और R -4 लेंगे। हम अपना G1 G2 जो भी हमारे पास है वो हम फाइंड करने वाले हैं। 3 नंबर्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, एक G1, दूसरा G2, तीसरा G3 हमने अज्यूम कर रखे हैं। नाउ G1 के लिए अभी हमें पता चला ये सेकेंड टर्म है तो ऑफ कोर्स AR होगा। AR का मतलब है 1 into 4, तो हमें यहाँ 4 होगा। G2 विल बी AR स्क्वायर। हमारा सीक्वेंस तो कुछ ऐसा ही दिखता है, AR स्क्वायर AR क्यूब। तो हम बेसिकली अपना कंसेप्ट ही यूज कर ले। इवन इफ यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द थर्ड टर्म यू विल बी गेटिंग द सेम। ओके, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। AR square, that means 4 4 times 16 and 16 we are getting. What is the third term? What is the third term? What is the third term? Tell me. AR cube, right? Are you doing it, Ali and Alina? Are you doing it? Ma'am, it is 64. I'm doing. 64. Check it, Alina. Are you getting the same? Ali, if you are done, do the other case also. Solve the other case also. Tell me what is G1 for that case, what is G2 for that case, what is Z3 for that particular case. Please tell me, Ali. -4 for G. -16. -64. We got it. Now, which will be the answer? Both will be the answer. 4, 16, 20, 64 or -4, 16, -64. Let's read the question. Insert 3 number between 1 and 256. We wanted to introduce the number in between 1 and 256. That means the number must be positive number. ध्यान से सोचो, हमारे दोनों एंड पॉइंट पॉजिटिव है। ओके, इन दोनों के बीच हम नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो भी हम नंबर्स लेंगे वो पॉजिटिव ही होने चाहिए। यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो हमारा सेकेंड वाला सिनेरियो हम रिजेक्ट करेंगे और फर्स्ट वाला एक्सेप्ट करेंगे। 4, 16, 64 ये 3 नंबर्स हैं जो 100 and 256 के बीच है और हमें जब हम इसे ले रहे हैं तो हम एक जीपी क्रिएट कर पा रहे हैं। ध्यान से देखो, yes it's a GP, 1 then 4 then 16, 1 4 times 4, 4 4 times 16, 16 4 times 64, 64 4 times 256. It is working like that, right? Right? सेकेंड वाला भी जीपी ही क्रिएट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जीपी क्रिएट नहीं कर रहा है। ध्यान से देखो, कॉमन रेशियो वहां भी सेम है, ठीक है, बट क्योंकि 1 and 256 के बीच का नंबर हमें लेना है इसीलिए हम ये बात। गॉट इट? Yes, ma'am. लेट्स कंटिन्यू। नाउ रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। ये तो बात हुई ज्योमेट्रिक मीन की, जब एक टर्म हमें इंट्रोड्यूस करना हो रहा था तो हम दोनों
कॉर्नर लाइक एन पॉइंट्स एन नंबर्स को ले रहे थे, उसको रूट में रख रहे थे और हमें मिडिल टर्म मिल जा रहा था और वो जो सीक्वेंस क्रिएट हो रहा था वो जीपी में रह रहा था. नाउ द रिलेशंस बिटवीन arithmetic mean and geometric mean. Okay. Now, do we know from arithmetic mean that 2b is equals to? Can we write for arithmetic? No, you tell me first. What is the formula for arithmetic mean? Geometric mean के लिए तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि we can find geometric mean by taking root AB. Okay, if A and B two numbers we are having, then in between we can introduce a number root AB and that will create a GP. What about a arithmetic mean? Yes. So first let me explain this part. From where we are getting root AB. Suppose you are having A, you are having B, and you have introduced X over, and this must be in GP. So can we say X by A, this ratio must be equals to B by X? Can we say that? Can we say that? Ali and Alina, अगर हमारे पास A and B two numbers है और उसके बीच में कोई नंबर हमें इंट्रोड्यूस Yes, करना है, ma'am. फॉरगेट अबाउट द फॉर्मूला, हमें नहीं पता है फॉर्मूला क्या है. ओके, अगर मिडिल में एक नंबर इंट्रोड्यूस ही करना है हमें, तो हमें पता है कि x अगर हम इंट्रोड्यूस कर दिए तो वहां से अगर ये जो सीक्वेंस हमें मिला ये जीपी में ही होना चाहिए, तो कॉमन रेशियो मस्ट बी सेम, x बाई ए मस्ट बी इक्वल्स टू b बाई एक्स. और यहाँ से हम क्या लिख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर, दिस x विल बी गोइंग ओवर हियर, इज इक्वल्स टू a इनटू b. और यहाँ से हम क्या पता कर पा रहे हैं कि x इज नथिंग बट रूट ए बी. यस और नो? Yes, ma'am. Yes or no? And from here only the geometric mean formula came, that the middle term will be nothing but root AB. Please don't memorize it. See the concept we have used, the common ratio we have compared, and from there we got. तो क्या हम ऐसा concept use करके arithmetic mean का भी formula बना सकते हैं? Yes. अगर हमारे पास A है, अगर हमारे पास B है, और यहाँ भी अगर हमने X या Y या Z, चलो Z इंट्रोड्यूस कर दी, और अगर ये सीक्वेंस एपी में ही होना चाहिए, तो क्या हम लिख पा रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन दोनों के बीच के डिफरेंस के इक्वल होना ही चाहिए, तभी ये एपी में होगा? आया ना? Can we say that second term minus first term must be equals to third term minus second term? Ali and Alina. Yes, are you getting it, Alina? Yes, ma'am. Ali? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So from here we'll be able to say Z and Z will be on one side. So Z plus Z is equals to B plus A. That means 2Z is equals to B plus A. That means Z is equals to B plus A by 2. Yes. Z is equals to A plus B by 2. अरिथमेटिक मीन हम कैसे फाइंड करते हैं? जो भी हमारा एंड पॉइंट्स होता है उसे ऐड करके अगर हम उसे 2 से डिवाइड कर दे. ये कहाँ से मिला? ये हमें कंसेप्ट से मिला. इज इट मेकिंग सेंस टू बोथ ऑफ यू? Yes, ma'am. तो हमें अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा. तो आज के बाद से जब भी हमें अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखना होगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a plus b by 2 और द एंड पॉइंट्स by 2. एंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखना होगा, we'll be writing it root a. ये दोनों हमें कंसेप्ट से मिला. नाउ we want to create a relation between A and G. Now let's do the subtraction. Okay, suppose this is equation number 1 and this is equation number 2. These all the explanation part you have to just keep in mind. Okay, this is just explanation. Now let's subtract equation 1 minus equation 2. Okay, 1 minus equation 2. In equation 1 on the left hand side we were having arithmetic mean. Okay, and in equation 2 on the left side we were having geometric mean is equals to a plus b by 2 minus root ab. Are you getting it from where I have written this one? Ali and Alina.
Yes, ma'am. Now arithmetic mean minus geometric mean. Let's try simplifying the right side. So we'll be having a plus b. Can you tell me what we'll be having? Please tell me, Ali and Alina. अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें एलसीएम लेके तो हमें क्या मिलेगा न्यूमरेटर में? Yes, Ali and Alina, what we'll be getting in the numerators part? Ma'am, a plus b minus a into b. A plus b minus A into b. a into b. This 2 you will not multiply LCMs to that numerator. यहाँ डेनोमिनेटर 1 था और एलसीएम लेने के बाद हम कह रहे हैं कि डेनोमिनेटर 2 है. So 1 2 times 2, so that 2 you will not multiply. Ali and Alina. आया ना? Yes, ma'am. Alina, are you getting it, Alina? Yes, ma'am. So क्या हम a plus b minus 2 root ab को ऐसा कैन बी राइट इट एज a को हम क्या रूट a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b को क्या हम रूट b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. This minus 2 root ab, can we write it like this? Now does it looks like a formula now? क्या ये एक फॉर्मूले की तरह दिख रहा है न्यूमेरेटर्स पार्ट? अगर हमने a को रूट a स्क्वायर लिख लिया, b को रूट b स्क्वायर लिख लिया और 2ab एज इट इज हमने लिखा, जस्ट रूट्स अलग अलग कर दिए, तो क्या ये कोई फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? आया ना? Ali and Alina, does it looks like a formula? Yes, ma'am. Can we say it is nothing but which formula, Alina? A square plus b square minus 2ab A plus B whole plus or minus minus. minus. Ali, are you getting it, Ali? Yes, ma'am. ये रूट a माइनस रूट b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की तरह दिख रहा है. हमने क्रिएट किया ये फॉर्मूला. We have just done little bit of like the representation we have changed and we ended up getting a formula. Okay, now this root a minus root b whole square, can we say जो भी a का वैल्यू, जो भी a का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो या तो रूट के अंदर है तो ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स. ओके, वी आर नॉट गोइंग इन कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर. सो रूट, ये रूट कुछ भी हो, दूसरा वाला रूट कुछ भी हो, इस ब्रैकेट के अंदर मे बी इफ इवन इफ वी आर गेटिंग अ नेगेटिव बट स्क्वायर जब करेंगे तो वो पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा एंड डेनोमिनेटर में भी एक पॉजिटिव नंबर है. कैन वी से दैट जो भी रिजल्ट जनरेट होगा रूट a माइनस रूट b का होल स्क्वायर बाय 2 इट मस्ट बी पॉजिटिव. कैन वी से दैट? Ma'am. कैन वी से दैट? यस अलीना, कैन वी से दैट? क्योंकि न्यूमेरेटर में होल स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आए आंसर या नेगेटिव आए उसका स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाएगा और डेनोमिनेटर में एक पॉजिटिव नंबर है तो फाइनली हमें यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो डेसिमल होगा, होल नंबर होगा, क्या होगा इट डजंट मैटर बट पॉजिटिव आंसर जनरेट होगा. यस और नो अलीना? Yes, ma'am. Okay, if we understand this much that the answer must be positive, that means we can say that हमारा जो am अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड किया, इसका जो आंसर आ रहा था वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि न्यूमेरेटर में एक स्क्वायर होल स्क्वायर टर्म है एंड डेनोमिनेटर में एक पॉजिटिव नंबर 2 है.
ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर डिवीजन हम करें तो एक पॉजिटिव आंसर ही जनरेट होगा, और यहाँ से हमें एम एंड जीएम के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है कि अरिथमेटिक मीन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? कहाँ से मिला हमें ये हमारे ऑब्जर्वेशन से, हमारे फॉर्मूला से मिला। गेटिंग इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इनइक्वालिटी चैप्टर हमने पढ़ रखा है, तो हम very easily we are able to shift this gm to other side and it will become 0 plus gm. That means arithmetic mean is bigger than or equals to geometric mean. So आज के बाद से जब भी हमें कहीं ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मिले या फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मिले या फिर असोसिएशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिले कि अरिथमेटिक मीन इज बिगर और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, वी विल बी सेइंग या yes it is. Okay, now let's solve few more questions. So these were all the explanation about arithmetic mean and geometric mean. Okay. Now let's solve few questions which is not basically based on this one, which is just from our exercise and based on nth term, based on geometric progression. Okay. I'm taking a random question which I wanted to discuss. So suppose we are having find the sum of products of corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1 by 1. Okay. हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म। करस्पॉन्डिंग टर्म का मल्टीप्लीकेशन पहले हमें करना है, दैट मीन्स इस 2 को 128 से फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस 8 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी हमारा आंसर जनरेट होते जाएगा लास्ट में सारे को ऐड करना है। आ रहा है समझ में हमें क्या करना है यहाँ पे? अलियन अलीना, करस्पॉन्डिंग Yes, टर्म जो हमारा सीक्वेंस में है, फर्स्ट सीक्वेंस में 2 है, देन 4 है, देन 8 है, देन 16 है, ठीक है, देन 32 है, और सेकेंड वाले सीक्वेंस में 128 है, देन 32 है, देन 8 है, देन 2 है, देन 1 by 2 है। पहले हमें करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? Tell me quickly please. I want to cover 2-3 more questions. Please tell me quickly. And 256. Next one, 32 into 4. जल्दी जल्दी बताओ। अलियन अलीना। 128. Next one. 64. Next one. 32. Next one. 32 into 1 by 2. 15. ये सारे टर्म्स को अब हमें ऐड करने हैं, मैनुअली नहीं। मल्टीप्लिकेशन तो हमने मैनुअली कर लिया, बट एडिशन हम मैनुअली नहीं करेंगे, हम सीक्वेंस दिस सीरीज वाले कंसेप्ट को यूज करके एडिशन करेंगे। तो क्या ये एपी या जीपी कुछ क्रिएट कर रहा है? 256, 128, 64, 32, 16, is it creating AP or maybe GP? So GP Yes, we are ma'am. discussing. It is creating GP, right? Yes, ma'am. The common ratio is it 1 by 2? Is it 1 by 2? Yes, ma'am. Okay, then we'll be using the sum of 1, 2, 3, 4, 5 terms. Okay, sum of 5 terms of this GP. As 5 will be finding the formula A 1 minus R to the power n by 1 minus R.
or maybe the same formula, a r to the power n minus 1 by r minus 1. Whatever you want, you can use it. Here our r is 1 by 2. It is smaller than 1, so we can use this one. Okay. And then we can find the sum. Directly अगर हमें sum find करना होता तो वो ज़्यादा simple होता, but we are bound to use the formula. Is it clear to both of you? Yes, ma'am. Yes. Okay, I'm leaving it. Similarly, हमने ये question क्यों solve किया? हमने ये question इसलिए solve किया ताकि हमें ये जो next वाला question है ये समझ आ जाए. So that the product of the corresponding terms of the sequences A, AR, AR is square, AR to the power n minus 1 and AR, AR is square, AR to the power n minus 1 form a GP. और यहाँ हमें सम नहीं फाइंड करना है एंड फाइंड द कॉमन रेशियो. जस्ट हमें कॉमन रेशियो फाइंड करके एंड विल बी लीविंग. Okay, let's do it. Show that the product of the corresponding term of the sequence, these are the terms and these are the terms, the product we have to find, and when you will be doing the product you will find that it is creating again a new sequence, and that sequence common ratio we have to find. Since the terminology common ratio is mentioned over here, we know that it must be in GP again. Okay, so let's do the multiplication. And yeah, we also have to show that it forms a GP. So basically, if we can say that the ratios are same, all the ratios between second term to first term, between third term to second term, between fourth term to third term, all the ratios are same, then it is in GP, and then whatever ratio we are having in hand, that is the common ratio. Okay, let's do it. First, we will be doing the product of this corresponding term. So A with A, we will be multiplying A with B, comma. Now let's do the multiplication of this AR with AR. So what we'll be getting? A, A, and then the small r is also there, capital R is also there. Yes or no? This is what we'll be getting. Or if you want, you can write it the way we are having it. Why to arrange it? Because nothing we are getting from here. So let's write it as it is. That AR we are multiplying with AR. AR, I mean AR. Getting it? Ali and Alina. Yes, ma'am. Ali, are you getting Yes, it? ma'am. Ali, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके, ए आर स्क्वायर को ए आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. This is the third term, the fourth term, and like that it will continue. Last term, let's do the multiplication. nth term हमारे पास है ar to the power n minus 1, and nth term दूसरे सीक्वेंस में भी है ar to the power n minus 1. तो हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा ही दिखेगा, and ar to the power n minus 1, this is the nth term, multiplied with ar to the power n minus 1. Okay, this is the last term, called as nth term. Now ये जो हमने यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट किया करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके, हमें बस यही यहाँ पे शो करना है कि ये एक जीपी है. तो चलो देख लेते हैं ये जीपी है या नहीं. चलो चेक कर लेते हैं. कैसे चेक करते हैं जीपी? सेकेंड टर्म, लेट्स राइट इट. सेकेंड टर्म by first term, you can also write it as a2 by a1. That means AR
AR over A to A. Yes or no? Ali and Alina. Similarly हम ratios check करेंगे third term over second term. अगर ये रेशियो हमारा सेम आए तो हम कह सकते हैं कि ये एक जीपी है, राइट. थर्ड टर्म हमारा क्या है, ए आर स्क्वायर. इज इट क्रिएटिंग अ जीपी? अली एंड अलीना कैंसल आउट, जो भी हो रहा है कैंसिल करके चेक करो. इज इट क्रिएटिंग अ जीपी? यस और नो? क्या मिल रहा है हमें कॉमन रेशियो? Are we getting RR? Yes or Yes. no? Yes, ma'am. So it is creating a GP and hence the common ratio is RR. Is it crystal clear so far? Yes. Yes, ma'am. बहुत ही basic questions हम solve कर रहे हैं. Let's do the next one. If the first and nth term of a GP are A and B respectively, if P is the product of n terms, then हमें ये कुछ प्रूव करना है. P square is equals to AB to the power n. Let's see what the question says. If the first and nth term of a GP are this, अगर हमारा first term A है, okay, अगर हमारा first term and nth term, that means A r to the power n minus 1, right, Ali and Alina? Yes, ma'am. ये हमारा अगर B है, okay, nth term का फॉर्मूला हमने यूज किया है, A r to the power n minus 1. अगर ये हमारा B है and P is the product of n terms, P क्या है, n terms का प्रोडक्ट है, तो हमें ये प्रूफ करना है. विल बी राइटिंग P, बट यहाँ से हमें एटलीस्ट जो मिल रहा है, let's do the simplification, let's find whatever we are going to get from it. क्या मिल रहा है हमें यहाँ से, हमें यहाँ से A, okay, A is already A, number is given, so yes, keep it like this, keep it like this, equation 1, okay. Now product of n terms, product of n terms of a GP, that means हमारा जीपी का जनरल फॉर्म तो कुछ ऐसा दिखता है. फर्स्ट टर्म में, नेक्स्ट टर्म ए आर, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म ए आर. यहीं से तो हमें nth टर्म का फॉर्मूला मिला है, राइट अली एंड अलीना, राइट. Yes, ma'am. ओके, सो हमारा जीपी तो कुछ ऐसा दिखता है. हमें क्या प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स करने, लास्ट nth टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर n माइनस 1, राइट. ये सारे मल्टीप्लाई करने आपस में, यस, हमें ये सारे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ओके. If we will be doing the multiplication of this all, तो क्या हमें a into a into a into a into a कितने बार मिलेंगे, n टाइम्स मिलेंगे. yes or no? yes or no? right, Ali and Alina? Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, can be written in the next step as a to the power n, right, right.
क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का जो हमें प्रूफ करना है वहाँ a टू द पावर n तो हमें दिख रहा है, राइट? अलियन अलीना, तो क्यों ना ये सारे a को एक साथ ले लिया जाए और आपस में मल्टीप्लाई करके इजीली हम क्या पा रहे हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, a टू द पावर n होंगे। और हमारे पास क्या है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ फर्स्ट वाले टर्म में कोई भी r नहीं है, ओके, दैट मीन्स r है, देन r स्क्वायर है, देन r क्यूब है, देन r टू द पावर 4 है, ऐसे सारे r मल्टीप्लाई हो गए r टू द पावर n माइनस 1 तक मल्टीप्लाई होंगे, राइट? अलियन अलीना, Yes, ma'am. दैट मीन्स एक्सपोनेंट लॉ अगर हम यूज करें तो क्या हम कह सकते हैं कि r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऐसे करते करते n माइनस 1 तक हमें ऐड करना है एक्सपोनेंट्स को। गेटिंग इट अली एंड अलीना? Law of exponent says that if we are having a to the power n into a to the power n, which can be written as a to the power n plus n, but this is not only true for two terms. You can have a to the power z, this will be z over here. You can have a to the power p, here p will be there. Am I making sense? अगर बेसिस सेम हो, पावर सेम हो या डिफरेंट हो और सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में हो तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं। डू यू नो दैट? Yes, ma'am. Yes. Okay, Ali, are you getting it, Ali? Yes, ma'am. Okay. Now हमारे पास एक फॉर्मूला है, you must have seen that formula in the previous class while learning AP, arithmetic progression. वहाँ पे एक मैथमेटिशियंस है गॉस, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि अगर हमें सम ऑफ n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, ओके, n नेचुरल नंबर्स 1 से लेके 5 तक या फिर 1 से लेके 100 तक या फिर 1 से लेके n तक, लाइक 1 2 3 4 5, अगर n तक सम हमें फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स will be n into n plus 1 by 2. Do you know this formula, Ali and Alina? Yes, ma'am. ओके, यू नो दिस फॉर्मूला कि n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करने का ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमें मिल भी जाएगा। ओके, अगर हम एपी का कंसेप्ट भी यूज कर ले तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है? तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 ये फॉर्मूला, लेकिन हमारे पास तो n तक टर्म नहीं है, हमारे पास n माइनस 1 तक टर्म, ठीक है? हमारे पास n माइनस 1 तक ही टर्म है। अगर n तक टर्म होता तो डायरेक्टली हम यही लिख देते एक्सपोनेंट में, बट हमारे पास तो सिर्फ एक पहले तक n माइनस 1 तक टर्म है। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे जहां जहां n दिख रहा है ना वहां n माइनस 1 लिख लेंगे और एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे, ओके, एज पर आवर नीड। सो n के प्लेस पे हम क्या लिखने वाले हैं इस ओरिजिनल फॉर्मूला में, n माइनस 1, क्योंकि हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस n माइनस 1 तक है, ओके। हियर विल बी राइटिंग n माइनस 1 प्लस 1 by 2. Am I making sense to both of you? Yes, ma'am. yes, ma'am. तो हमें क्या मिला, एक न्यू फॉर्मूला मिला जो हमें रिक्वायर्ड है, इनटू n बाई 2, दैट मीन्स 1 से लेके n माइनस 1 टर्म तक का सम यही होगा। लेट्स राइट इट, n माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे r टू द पावर n माइनस 1 इंटू n बाई 2. एनी कंफ्यूजन सो फार, अली एंड अलीना? No, ma'am. ओके, अब हमें कुछ भी करके ये प्रूफ क्रिएट करना है, कुछ भी करके, ठीक है? a तो हमें मिल चुका है टू द पावर n, बस ये b हमें कैसे भी करके b टू द पावर n, तो हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक, हम ये यूज करेंगे। लेट्स राइट इट ओवर हियर, यहाँ मैं लिख ले रही हूँ कि हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है, a r टू द पावर n माइनस 1 का मतलब ही b, we know this, okay? Now what can be done, let's think about it. अच्छा, इस इक्वेशन से क्या हम लिख सकते हैं, r टू द पावर n माइनस 1 इज b बाई a, कैन वी राइट इट?
Can we write it? And do you know, Ali and Alina, that if we are having r to the power 4 is equals to 2, then r will be 2 to the power 1 by 4? Do you know this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you know this, मैं same concept यूज करने वाली हूँ कि r के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कि b by a to the power 1 by n minus 1. Can I write it? Can I write it? Ali and Alina, Yes, ma'am. Yes, ma'am. r के प्लेस में हम लिखने जा रहे हैं b by a to the power 1 by n minus 1, और जो और पावर्स है वो हम लिखेंगे एज इट इज, कॉपी पेस्ट करेंगे. n minus 1 तो है, n तो है, 2 तो है, जस्ट r के प्लेस पे हमने ये लिख रखा है. गेटिंग इट? Yes, ma'am. Let me wipe this point. Let's multiply both the exponents, because law of exponents says that if two exponents we are having, we can simply do the multiplication. N minus 1, n minus 1. We are just left with a to the power n into b by a to the power by 2. Is it so? Ali and Alina, any confusion so far? Ali and no? Okay, let's continue. Now this b by a to the power n by 2, we can write it as a to the power n into b to the power n by 2, and a is also having power n by 2. Okay. Now division concept I am going to use. In numerator a to the power n is there, in denominator a to the power n by 2 is there. So can we write a to the power n minus n by 2? Can we write? Can we write? See, only the law of exponents we are using in each and every step. Is it making sense to you? In numerator a to the power n is there, in denominator a to the power n by 2 is there. The law of exponent says that a to the power m by a to the power n is equals to a to the power m minus n. Do you know that, Ali and Alina? Yes, ma'am. Ali, are you getting Ali? Yes, ma'am. Okay. n minus n by 2 means what? Tell me quickly. जल्दी से बताओ, n minus n by 2 क्या होगा अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो? N by 2. a to the power n by 2, b to the power n by 2. बट हमारे प्रूफ में तो कुछ ऐसा कुछ दिख रहा था, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a b to the power n. तो क्या हम यहाँ से ये फाइंड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, राइट? Yes, ma'am. क्या हम करेंगे, a b को चलो साथ में लिख लेते हैं. Okay, n by 2 you can write like this, or you can write n and then 1 by 2. You can also write n at first. ab to the power n तो है ही, और एक पावर है जो 1 by 2. बेसिकली n by 2 को ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है. Okay, and from here we can say that p square is ab to the power n. Getting it, Ali and Alina? Hence proved. Yes, ma'am. तो क्या किया हमने, प्रोडक्ट, सबसे पहले प्रोडक्ट लिखा सारे nth टर्म तक. उसके बाद हमने अपना प्रूफ देखा कि आखिर करना क्या है. तो हमारे प्रूफ में a टू द पावर n कुछ ऐसा दिख रहा था, तो हमने सोचा चलो सारे a को कलेक्ट कर लेते. जब हमने सारे a's को कलेक्ट